A slew of BJP ruled states are talking about introducing a uniform civil code. Uttarakhand, Assam, Uttar Pradesh, to name just three. I'm Barkhadat, you're with the Mojo story. This is our big political focus on the broadcast this evening. Is it legally tenable for states to proceed by themselves, even in the absence of a national consensus on the Uniform Civil Code? The Uniform Civil Code, of course, is an aspiration of India's constitution, but in this mahal, so to speak, in this environment where day after day there are actually senior political functionaries making anti Muslim remarks and talking about a Hindu Rashtra, is it tenable? Is it desirable? And is it feasible? This is a conversation that has many dimensions to it. It has, as I said, the legal dimensions and the political dimensions. As women, many personal laws actually militate against the equality between men and women. But there is also the larger constitutional question of religious equality. And in this present environment, many might argue that this is not even the time that we should be talking about the Uniform Civil Code, but that's exactly what at least three states are doing at the moment, beginning preliminary steps moving towards a uniform civil code according to their chief ministers and their governments. To discuss this issue, let's introduce our guest today. Tavleen Singh, veteran columnist and author, is with us. From Uttar Pradesh, we're joined by BJP leader Ashwini Shahi. Welcome to the program, sir. Sanjay Hegde, senior advocate, a constitutional expert, most recently arguing against the hijab rules in Karnataka, is with us. And we're also joined by Atikur Rahman, who's an Islamic scholar. Welcome, everybody, to the program. I'm going to be playing for you, before I start the conversation about the Uniform Civil Code, a video clip, one of many in recent days that has in fact gone viral. And this video shows you the editor and promoter of a channel called Sudarshan News talking about a Hindu Rashtra. No big surprise there. The gentleman has been described as vilifying Muslims even by the Supreme Court. But there is a BJP legislator present at this event while he is doing not just talking about a Hindu Rashtra, but asking people to pledge one. And let's hear this. संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे आवश्यकता पड़ी तो लेंगे लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता हमारी ग्राम देवता हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे सामर्थ्य दे जय दे विजय दे विजय दे विजय दे विजय दे Tavleen, let me bring you in for first comments. Look, I'm really conflicted about this. I'll be quite frank with you, because I have to tell you that I did the first story on Shah Bano. I actually was the first journalist to meet her because I happened to be in Indore, and I took the first picture of her. And my sympathies are I were at that point totally with her. She was a frail old woman married to a very rich lawyer who wasn't prepared to, raise her maintenance by 200 rupees or something like that. So I believe that the country should have a law that is fair to all its women and give them the same rights. And, as for religious laws and stuff like that, I have no time for them, whether they're Hindu, Muslim, or Sikh. So, I'm on the side of a civil law or whatever, a common law for all India's women, rather than, one that discriminates. But on the other hand, the ugliness of the atmosphere at the moment and the way in which BJP leaders are openly targeting Muslims makes me very uncomfortable with the timing of this.
Yeah, I think I'd be with you. I think, there is no question that many of these personal laws are completely archaic and completely militate against the equality between men and women. But is now the time? अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हो गया कि इतने सारे जो बीजेपी के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश उनमें से शामिल है, एक यूसीसी की इस वक्त इस समय बात कर रहे हैं? बरखा जी, देखिए, कोई ऐसी जरूरत, हर चीज की समय समय पर जरूरत पड़ती है, और इस समय अचानक बात करने का कोई ऐसा नहीं है। ये तो काफी दिनों से हम लोगों के एजेंडे में है। 370, समान आचार संहिता, सब लोग जो है, राम मंदिर, ये सारा हमारे एजेंडे में था। हम लोग इसको अपने संकल्प पत्र में इसको हम लोगों ने शामिल किया है। कई बार, जब से देखिए चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तब से हम लोग कर रहे हैं। उसमें कई पूरे हो गए हैं, कई जो बचे हैं वो करना है। क्या यहाँ बैठे हुए लोग, इस देश के निवासी, ये चाहते हैं कि एक झंडा एक विधान इस देश में न लागू हो? यही चीजें होती थी। बाबा साहब के संविधान को, बरखा जी, आज हर व्यक्ति मानने की बात करता है। हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, वो ये कहता है कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान का नाश किया जा रहा है। और उसी संविधान निर्माता बाबा साहब की इच्छा थी कि 370 जो है, एक समझौता है हिंदुस्तान में, वो नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब की परिकल्पना भी थी कि इस कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर इसको उठाया, और समय समय पर हम सीए की बात करते हैं, हम इसकी बात हम करते रहेंगे। और जो भी देश में यूनिफॉर्मिटी लानी है, उसको हम लेकर आएंगे, बरखा जी। और उसमें एक ये कदम बढ़ाया जा रहा है। आज अचानक इससे क्यों, क्या नुकसान हो गया? देश में एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, और भाजपा के लोग मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। कहां टारगेट कर रहे हैं? इस देश का प्रधानमंत्री जिस दिन खड़ा होकर ये कहता है कि संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार है, तो क्या उस दिन हिंदुओं की भावनाओं का हनन नहीं करता है वो? उस दिन किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए क्यों कहा? आज हर व्यक्ति ये कहने के लिए वो है, भाई, भारत में जो है बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी को स्वच्छंदता बना दिया गया है हिंदुस्तान में। और आज वही लोग कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स का दमन किया जा रहा है। जबकि देखिए, 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक में, बरखा जी, आज हमारी मुस्लिम बहनें किस तरीके से सकून में हैं, उनकी जिंदगी किस तरीके से नरक बनी हुई थी। जब देखिए कोई पर गुस्से में, जी सुनिए मेरी बात अश्विनी जी, आप इस बात का क्यों नहीं बात करते कि कैसे दुकानों में घुसकर जिस पैकेट्स पे उर्दू या अरबिक लिखा हुआ है, हल्दीराम की दुकानों में, यही सुदर्शन न्यूज की जो एडिटर है, वो वहां के उनके जो स्टाफ है, वो बुली कर रहे हैं हल्दीराम के दुकानदारों को। दूसरी ओर हमने जो आपको वीडियो दिखाया, उसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और बीजेपी की एक लेजिस्लेटर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी वो ओथ ले रहे हैं। तो इस माहौल में आप अपने मुस्लिम भाई बहनों को कैसे समझाएंगे दैट दिस इज फॉर प्रोग्रेस? आप इस माहौल में कैसे समझा सकते हैं? बरखा जी, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक, जो ये ओथ ले रहे हैं लोग, इस ओथ की आवाज को सुनाया जाए। क्या ये, इसमें देश का कोई विरोध है कहीं? इसकी आवाज को आप सबके देश के सामने अपने चैनल के से करिए। हमने सुना है इसको। इसमें कहीं देश के विरोध में कोई ये बात हो तो बताया जाए, पहली चीज। दूसरी बात, इस देश में रहने वाले कुछ तथाकथित, जो आज हम ही लोगों के द्वारा ऑडियंस थे, जो सिनेमा के लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो मुस्लिम ही हैं। उस समय क्या उस नहीं कहा गया? हाँ, मैं अभी भी उस खंडन करता हूं कि अगर उर्दू में लिखे हुए किसी नमकीन का किसी भी ने भी विरोध किया हो, ये गलत है। हिंदुस्तान में अगर सभी भाषाओं पर लिखा जा रहा है, तो उस लिखने में कोई दोष नहीं है, हर जगह लिखा होता है। कहां कहां आप मिटाएंगे? आज आप चले जाइए थाने में जो FIR दर्ज होती है, अब हिंदी में होने लगी है, पहले उर्दू में ही होती थी। वो अदालतों में वकील साहब बैठे हुए सीनियर एडवोकेट हैं। आपके जी एक मिनट, आपके जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, आपके और मेरे, हमारे देश के जो करेंसी नोट्स जी हैं, जी उसमें एक भाषा जो प्रिंटेड है हमारे करेंसी नोट्स में, वो उर्दू है। उर्दू के बाहर की भाषा नहीं है, हमारे अपने करेंसी नोट्स पे प्रिंटेड भाषा है सर। तो मुझे ये सब, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस माहौल में हम कैसे, जिसमें इतनी फेक न्यूज है, जिसमें इतना एक एंटी मुस्लिम सबटेक्स्ट है टू एवरीथिंग वी आर सेइंग, हम कैसे बात करें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की? वो मैं आपको जरा, आप सोचिए उसके बारे में। उतनी देर में मैं लीगल क्वेश्चन संजय हेगड़े से पूछना चाहती हूँ। कैन स्टेट्स प्रोसीड
themselves. And certain states, of course, have their own unique laws. Jammu and Kashmir had one till 370 was abrogated. We have states in the northeast that have them. Goa has certain provisions. So now you have other states like Assam, like UP, like Uttarakhand, talking about how they are going to do this, even if there's no national uniform civil code. Is this legally tenable, Sanjay? Well, one has to look at the draft first. The UCC is a nice hashtag, it's a nice slogan, but what exactly will a UCC contain? I must tell you that in India, we don't even have a common tax code. A Hindu can, for instance, be taxed under a Hindu undivided family, as well as a personal SSE who is a Hindu. We don't have uniformity in laws, and uniformity is not necessarily a good thing. The laws also have different provisions for different circumstances. Now, I did hear the BJP gentleman speak about Baba Saheb. You must remember in constitutional history that Baba Saheb Ambedkar resigned from the Indian government when he couldn't get the Hindu Code bill passed. And the same kind of opposition was there from people who would today possibly be in the BJP. It was said that there could be no divorce among Hindus. That a Hindu man also could marry more than once, and so on and so forth. So unless you have a specific draft, it is very difficult to comment. Secondly, look at the problem which will ensue. If each state goes on with its own draft, you may have a Hindu marriage, which may be valid in Uttar Pradesh, or which may be invalid in Uttar Pradesh, but may be valid elsewhere. So, how are the children of such a marriage to be treated? How are property rights to go on? All these things, it will only end in confusion, worse confounded. If there is one central draft, we have the Hindu Code bill now, we have the Hindu Marriage Act, we have the Guardians and Wards Act, the Adoption Act, etc., etc. If there is a central draft of even what is supposed to be a uniform civil code, then it would be up for discussion. It would also probably go into parliamentary committees. We would know what we are looking at. Right now, I think what the chief ministers are doing are only floating trial balloons and hashtagging so as to appeal to their core constituency. Now, show us a draft. And I'd also like to ask one of you two more questions. Will there be absolute equality among all citizens? Am I free to marry any citizen in India? Would same-sex marriage be allowed? That's uniform. I mean, I can be uniformly obnoxious both to the Hindu right as well as the Muslim right. Let's have a draft first. Yeah, well, at the moment, we're not seeing a national draft. We're seeing individual states actually climb onto several bogies. One is, of course, the use of Urdu and its place in our history. The second is on polygamy. Again and again, Assam's Himanta Biswa has spoken about polygamy among Muslims, whereas we have two different studies, one quoted by S.Y. Qureshi, Tavleen, and then I'll come to Atiq Saab in his book, which basically says that the last study you actually had on polygamy on a religion-wise basis was in the 1970s. There hasn't been a survey after that. And it showed you that all religious communities had a certain degree of polygamy. This was not specific to Muslims alone. The other most recent survey that we have actually shows you that, we have the numbers here, that a polygamous Hindu was likely to have 1.77 wives, a polygamous Muslim 2.55, a polygamous Christian 2.35, and a polygamous Buddhist 3.41. But put like that, it doesn't tell you very much. The fact is that politically, this is the narrative that the BJP is seizing, even though the data doesn't strictly break it, reflect that is the practice that is embraced by Indian Muslims. What most people will take it to mean is, oh, the Quran allows this, so therefore it must be happening. In India, the Hindus could marry as many wives as they wanted to. So actually, when the Muslim law was made, it was probably a way to stop them marrying 1,000 women, I mean, it was to restrict it. But that was then, right? And let's face it,
Muslim women, and by the way, I want to say to the BJP representative कि आपके मुंह से मुसलमानों के लिए हमदर्दी कुछ वो ठीक नहीं लगती है, हाँ? The इरादा नेक नहीं है. That's what I want to say. You know, even the कि जो हम वो जिस सभा में वो हिटलर सलूट करके हिंदू राष्ट्र का वो ले रहे थे शपथ, उसमें कितने मुसलमान थे? तो प्लीज आप ये हमदर्दी मत जताएं. दूसरी बात, दैट्स वेरी क्लियर, यू नो, ये फजूल की हमदर्दी मत जताएं. हमको सबको पता है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं. फर्स्ट, लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे. सेकेंडली, it is unfair to women that in India, which is not, you know, they're not asking for the Shariat in the United States of America or in Europe. So in India, we are not a Muslim country. So why should we be having any laws that, or why should the Shariat be above the laws of India? You know, I want to make that clear. But if these people had been a little bit more honorable in the way they were handling this, they could say this very clearly and say, you know, everyone will be treated equally. But at the moment, when I hear those chief ministers speak, you know, I don't see any good intention. I see prejudice. I see provocation. And I'm very worried, as I've been writing, about the situation that we're already in this country, that, you know, this is just more fuel to the, you know, there'll be a civil war if we carry on like this. Especially on the grounds on which the Uniform Civil Code is being brought. It seems to be all about what Muslims do and what Muslims don't do, as opposed to creating a level playing field where men and women and you know, all communities will have, as Sanjay asked and pointed out, the same rights. But Atiq Saab, let me reverse this. The triple talaq debate, in a way, should have also been a kind of wake-up call for the clerics and the mullahs, as it were, of the Muslim community, that there are certain orthodox laws that need to be abandoned. For example, S.Y. Qureshi, who's done all of this work, busted the myth of Muslims ever outnumbering Hindus, has said that Muslims themselves must come forth and say, we disapprove of polygamy. Yeah, that's correct, Barkha. In fact, when you read the Quran related to the verses related to polygamy, it's very clear. The ultimate dictate from Allah comes that since you cannot maintain equality amongst your wife, it is advisable to marry once only. So the entire gamut of the polygamy thing related to Islam and Quran does not even specifically tells us to marry 4 women. And the 4 women part, a wife part, Barkha, is related to time and the context in Saudi Arabia, wherein after the inauguration of Islam in Saudi Arabia, wherein the women were buried alive, the sex ratio between men and women, the women ratio increased. And therefore, this 4 wives was applicable at that time. Later on, since the Quran is very much sure of all the times to come, it bars the men to marry 4 times rather than 1, because equality could not be maintained. So S.Y. Qureshi is very much correct. Herein, Barkha, even Mr. Hegre and Tavleen has put it very, very rightly. But I would like to ask one question to Tavleen Singh ji. Tavleen ji, what is bad in Sharia? Every time the BJP, the Hindutva elements, they come out with the argument of ये मुल्क शरिया से नहीं चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा. I would like to seriously ask you the question, where in the Muslims, besides you don't go back to 1984 and 1986, what was done by Rajiv Gandhi, and everyone, you and people, journalists like Barkha, they were up in arms regarding that. Even the Muslim intelligentsia at that time, the liberal-minded Muslims opposed what Rajiv Gandhi did with that. So, what is bad in the Sharia law?
before Tavleen answers, I have a question to you. You agree that polygamy has no place in a society of governed by modern family law. So why don't we see, for example, the Muslim Personal Law Board step up and say this was in a different context? We think they should be got rid of, because one of the main bases on which the BJP chief ministers are talking about the Uniform Civil Code is what they say is the practice of polygamy in the Muslim community. Barkha, have you ever talked to the All India Muslim Personal Law Board? What are they opposed to? Yeah, yes. but what are they opposed to? They are not opposed to that. No, we should get the right to marry 4 times. They are opposed to the vocabulary of the Hindutva elements, what they are coming out with, and which Tavleen has rightly pointed out. Their intent is bad. They are bad in words. Have you ever seen a BJP spokesperson coming on the media channels and saying that modern laws will be very much applicable in the draft bill of the Uniform Civil Code? No, they come out with the argument that nobody would be allowed to have 2, 3, and 4 wives. The UP chief ministers come out with the words that Sharia is not the law of India. You have a question for Tavleen, and then Ashwini ji would like to respond to Tavleen. So let's go to Tavleen first, then Ashwini, then Sanjay. Okay, I don't want to be offensive, so I'm being very careful when I say this, but there are aspects of the Shariat which, for me, Shariat is already being implemented in Afghanistan. Let's not talk about the past. Let's talk about the present. And the condition of women in Afghanistan is shameful. Shameful. It's now, nearly 250 days that girls are not allowed to go to school. A woman can't leave the house. And this is in the Shariat, right? Secondly, stoning people to death for adultery, burying people alive for, these are very primitive customs, and they came out of a primitive place. In India, we have had a lawmaker, and I hate to sound like a Hindutvavadi, but Manu was the first, I think, lawmaker in the world. He created the first man-made law that was not by gods and kings, and we should be proud of that. But I totally object to the way that the BJP is attacking the Sharia, because they're doing it just to create more prejudice against Muslims. ध्यान दिया आपने, उसमें उर्दू की बात की. उर्दू came under attack. लखनऊ, जहां पे आज आप हैं, it is a city built on the traditions of what used to be. आज तो वो पुराना क्लीशे हो चुका है जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते थे. तो आप ये इस माहौल में आप कैसे एक प्रोग्रेसिव सिविल कोड की बात कर सकते हैं? बरखा जी, देखिए 2-3 जवाब जैसे तवलीन सिंह जी ने कहा कि आपके इरादे नेक नहीं है मुस्लिम्स के प्रति. शायद मैंने अगर ये गलत ना सुना हो तो आपने कहा. कैसे जस्टिफाई होगा कि हमारे इरादे नेक नहीं है? अगर हम 3 तलाक को दुनिया के सामने ले आकर कहते हैं हम कानून बनाते हैं. हिंदू राष्ट्र का जब शपथ लिया जाता है उस पे आपके सदस्य मौजूद होते हैं, और जो ये लोग कहते हैं, ये जो सुदर्शन टीवी के प्रमोटर हैं, वो बड़े बड़े बीजेपी की दिग्गज नेताओं के साथ जाके उनकी तस्वीरें हैं, उनके कनेक्शंस हैं. तो कैसे हम मान लें कि ये इरादा नेक है? बताइए अश्विनी. बरखा जी देखिए, ये बहुत गहरी चर्चा चली जाएगी, क्योंकि बहुत से टेलीविजन चैनल हैं जहां पर बैठकर दिन भर मोदी और योगी को गाली दी जाती है. क्या कहेंगी आप उसके लिए? अभी मैंने का उदाहरण दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री जब ये बोल सकता है कि मुस्लिमों का पहला अधिकार है, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और सिंह साहब कह रही हैं कि नहीं, आपके इरादे नेक नहीं है. हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, इरादे हमारे बहुत नेक हैं, तभी हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए राजीव गांधी वाला काम नहीं किया. हम लोगों ने 3 तलाक की बात की, हमने कानून बनाया. दूसरा मैं बात करता हूं बरखा जी, यहां पर हम लोग तब से बात कर रहे हैं कि मुस्लिम उर्दू कर रहे हैं. किसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्ठी लिखकर इसमें आपत्ति दर्ज कराई, जबकि हिंदुस्तान में पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कहीं आपत्ति नहीं दर्ज कराई. तो ये कष्ट मुस्लिम्स को क्यों है, और उन सो कॉल्ड मुस्लिम के संरक्षक लोगों को क्यों है कि हम महिलाओं को, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं है, और अगर हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं
कि जैसा अभी एडवोकेट हेगड़े ने कहा कि पहले आप देख लीजिए, आने दीजिए पहले ड्राफ्ट क्या होता है, लेकिन जहां तक एक बेहतर चीज है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? बहुत देश में कुरीतियां थी, सती प्रथा को खत्म किया गया, बहुत सी चीजें ऐसी थी खत्म की गई, 3 तलाक को हम लोगों ने खत्म किया, हलाला जैसी विकृत कुरीतियां इन लोगों के यहाँ पनप रही हैं, उसको अगर ये अच्छा मानते हैं, हम गलत मानते हैं। और अभी अब रहमान साहब ने कहा कि सरिया क्यों गलत है। हिंदुस्तान में एक झंडा, एक विधान, एक संविधान है, पूरे देश में आपका सरिया अदालतें क्या कर रही हैं? क्यों सरिया अदालतें हैं? जब मान्यता नहीं है तो महाराष्ट्र में 31-35 अदालतें, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में अदालतें क्यों हैं? आप जब क्या हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर आपको भरोसा नहीं है? क्यों है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। 370 का तो एब्रोगेशन हो गया, लेकिन हमारे संजय जी हमें बताएंगे बहुत से संविधान में और भी प्रदेश हैं अश्विनी जी, जो संविधान जिनको एक स्पेशल दर्जा देती है और उनके अपने अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स की प्रोटेक्शन है। संजय, ओवर टू यू। You have the 6th schedule as far as the Northeast is concerned. You have special provisions for various states, including the old Telangana, Andhra, all of that. The Constitution of India recognizes diversity. It makes diverse provisions for diverse circumstances. This kind of unnecessary homogenization, which is basically a UP Biharization of the rest of India, that is what is the problem. I think that we have to go far beyond the Indo-Gangetic plane to see wisdom in Indian civilization from all over. And one thing I must tell you, Barka, that we often make a mistake, assuming that Sharia is not part of law. Sharia basically means law in Arabic. It is the law under which, based on their holy texts, under which they regulate their lives. Sharia also has provisions like a practicing Muslim gives 2.5% of his income to charity. There are good provisions, there are bad provisions, provisions which may have gone out of use now. Be that as it may. Let me tell you a bit about constitutional history also. When the Constitution was written, we were a deeply divided society. We had suffered a partition, and that is why we came up with a constitution which attempted to paper over a lot of cracks. That is why there was the Uniform Civil Code was put in the directive principles of state policy, which was not justiciable. At the same point of time, there was, this is constitutional history, the Jamaat-e-Ulema-e-Hind, which was a body that opposed Pakistan. They said that the constitution was a compact, a contract with all its citizens, that personal laws would be respected, and that everybody would abide with the majority provisions. But I have to ask you something from a constitutional question. This matter has been before the Supreme Court, and if I'm not wrong, in 2015, while hearing several petitions, the Supreme Court did talk about the desirability of a uniform civil code. You also have those opposed to the BJP, but otherwise in favor of what they call a progressive uniform civil code. So in other words, Sanjay, they argue that we don't want a Hindu uniform code, we want a modern uniform code, a modern semblance of family law. Is there any basis to oppose that? Is there any basis to oppose that? Well, that's why I said, let's see at the draft. For instance, much as you may think it is patriarchal and all that, divorce is reasonably easy among the Muslims, at least on the male side. There is also the female right of divorce, which can be written in the Nikah-nama, called the Khula. Even a woman can ask for divorce. Now, if you were to have the same ease of divorce for both sexes in a new marriage law, which is applicable across the board, then maybe it can be looked at. But if, on the other hand, you say, no, we will have the Hindu code and we'll impose it across the board on every citizen. Whatever is there in the Hindu Marriage Act will be applicable to Christians, to Parsis, to Muslims, to Jews, then obviously people would have problems. Even the question of marriage. There are two concepts. Among the Hindus, it's a sacrament. It's a Saat Janam ka rishta. Among the Muslims, it's a matter of contract. So therefore, the ease of divorce comes from
the ease of dissolving a contract. So which concept are we to go by? That is why again and again, please come in with a draft before the country, Okay. before you shoot your mouth off. So before I come to Tavleen and Atiq Saab, what would happen if, let's say, Uttarakhand, UP, and Assam, the three states where the BJP has spoken about it, were to bring state-level sort of laws that are their version of the Uniform Civil Code? What would happen legally? Legally, if those state laws were to prevail against central laws which already exist on the topic, like for the Hindu Marriage Act, Yes. supposing there is a difference there in Uttarakhand or Assam, then you would have to have the President of India, to, which means the central government, to grant assent to those laws. And in those states, to the extent of the repugnancy, the state law would prevail. Otherwise, it would be mere decoration, and the central law would still prevail. Okay, Tavleen, you wanted to come in. Tavleen? I wanted to actually say that for a start, why now? Why are we talking about this now? Because the BJP is going on about ये तो हमारा एजेंडा था, हमने ये, आपने वादे और भी किए हैं, बेरोजगारी नहीं होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, उनको याद कीजिए। महंगाई के बोझ तले जो देश में अमीर लोग हैं वो भी मर रहे हैं। ये समय क्यों आपने ढूंढा है कि इस वक्त हम ये करेंगे? हाँ, तो प्लीज, मैं जो कह रही थी कि आपके इरादे नेक नहीं लगते हैं, वो इसलिए नेक नहीं लगते हैं क्योंकि आप जो भी कदम उठा रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप जानबूझ के मुसलमानों को छेड़ने के लिए, एक तो उनके रोजगार के जितने भी रास्ते थे आपने बंद किए, गौरक्षक, पहले तो गौरक्षक पीछे पड़ गए तो वो दुकानें बंद हो गई, फिर ये मेले जो है, हंसने की जरूरत नहीं है, आप पुष्कर के मेले में जाके देखिए कि कितने कम आजकल पशु बेचते हैं, पशुपालन बंद कर दिया है। अच्छा, दूसरा, आप अपनी सभाओं में मुसलमानों को बुला के उनके साथ क्यों नहीं बात करते? आप जहां भी होते हैं सब टिक्कादारी और अभी अब सिखों को भी लपेटने की कोशिश है। हम हिंदू नहीं है, हाँ, लेकिन हम भारतीय हैं और आप भारतीयता को कम कर रहे हैं। आपके जो ये कदम जो आप उठा रहे हैं, ये देश के लिए नुकसानदेह है। मिस्टर अश्विनी जी, मैं सवाल ये आपसे पूछूंगी कि हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं कि जम्मू में जो डिफेंस पब्लिक रिलेशंस थे, उन्होंने इफ्तार पार्टी की तस्वीरें दिखाई और उनको वो तस्वीर डिलीट करनी पड़ी क्योंकि वही सुदर्शन टीवी की एडिटर ओनर जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का शपथ लेने का ठाना है, उन्होंने कहा कि ये पॉइजन है ये तस्वीरें, और आर्मी ने ये डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद शुक्र है कि आर्मी में इतना गुस्सा था इसको लेकर कि उनके सीनियर अफसर्स ने फिर उसके बाद तस्वीरें रिलीज की ऑफ जनरल ऑफरिंग नमाज इन जम्मू एंड कश्मीर विद हिज मेन। तो आंसर तवलीन्स क्वेश्चन की व्हाई नाउ, क्या जरूरत है अभी? क्या इसलिए क्योंकि 2024 में चुनाव है, चुनावी मौसम दोबारा लौट के आ गया? बरखा जी, जिसका आप नाम बार बार ले रही हैं वो देश नहीं चला रहे हैं, वो देश के नीति निर्माता नहीं है। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने पहले भी कहा, मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी है, सबको गाली देने का अधिकार है और आपको पूछने का अधिकार है, तौलीन जी को ये कहने का अधिकार है क्यों, वाई, अभी क्यों, ये कोई मतलब नहीं। वही अधिकार उनको देता है कि वो भी कुछ कह सकते हैं, उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा। ये हिंदुस्तान है, कुछ भी कोई कह सकता है। बहुत लोग यहाँ पर आकर बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं, कोई किसी को अच्छा लगता है, बहुत लोग अच्छे हैं, किसी को बुरा लगता है वो बुरा कहते हैं उनको। तौलीन जी का कहना है कि अभी क्यों, तो कब तौलीन जी, कब? देश जब चल रहा है, देश में चीजें बेहतर हो रही हैं। बार बार आप लोग आज सरिया कानून की जरूरत आप कहती हैं, इस सरिया यहाँ पर हिंदुस्तान में एक विधान ना होकर सरिया कानून लगे, और बार बार मुस्लिमों की बात क्यों की जाती है? हम लोग जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम को छोड़ते नहीं है। आप गाय की बात करती हैं, हाँ, हमने गाय कटना बंद किया, हमने कटना बंद किया। आज जो है ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसका कुछ खामियाजा भी हम लोगों ने भुगता, लेकिन नहीं, गौ माता है, हमारे लिए हैं, जो हम मानते हैं तो हैं, आपके लिए नहीं होंगी। देखिए, मैंने आप एक मिनट थोड़ा सा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए बरखा जी।
एक फैक्चुअल करेक्शन, उसके बाद आप कंप्लीट करिए। बीफ को लेकर अलग अलग कानून है अलग अलग प्रदेशों में, कुछ प्रदेश ऐसे भी है जिसमें बीजेपी की सरकार है। मैंने कहा गाय हमारी बीफ माता है, कंजम्पशन मैंने ये वो नहीं ठीक कहा है। कि तौलीन जी की, बरखा जी की, या तो रहमान साहब की या हेगड़े साहब की भी हो, मैं नहीं हो मैं सकता है। मैं वो अलग गाय, अलग चीजें हैं। मैं हमारी उसकी माता बात है, ही नहीं गाय कर के रही। लिए हम कहेंगे। अच्छा देखिए कहाँ बात कटती मैं है? ये, कहीं कट नहीं रही थी। अरे आप आपने बहुत भी बहुत लोग गोश्त की काटते दुकानें हैं, बंद देश में करी बहुत लोग है। काटते हैं। चलिए वो आपने मुद्दा नहीं है। आज पशुपालन जो बंद मुद्दा करी है, है। तौलीन जी को मैं कहना चाहूंगा, हम देश के नीति निर्धारण के लिए जनता ने सरकार को चुना है और सरकार उस पर काम करेगी। सरकारों को लगेगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और दूसरे ओके एजेंडे में हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आर्थिक नीतियों का आज कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ही अकेला ऐसा देश है जो आज इस माइनस में जाने के बाद विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था ओके है। और अच्छा, आप लोगों को भी नहीं दिखता है, मेरा एक सवाल, नहीं दिखता है, लेकिन ये है हिंदुस्तान। सवाल। देखिए एक लाइन में मैं कंक्लूड करता हूं बरखा जी, हिंदुस्तान में कोई भी अगर गैर कानूनी या संविधान सम्मत काम नहीं हो रहे हैं, या हिंदुस्तान की भलाई के लिए जो काम करना है, हमारी सरकारें करती रहेंगी, इसकी शपथ लेंगे। हाँ, उन लोगों को कंडम भी हम करते हैं कि जो उसके नाम पर, क्योंकि वो आप लोगों की तरह जो विरोधी हैं, आप लोगों का मतलब आपसे नहीं है, जो विरोधी हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके तरह आपका भी विरोध वो कर रहे होंगे, वो आपको लग रहा होगा। लेकिन आज जो ये कानून की बात है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड के बाद आसाम हो या जहां भी हो, ओके, हम कोशिश आपने करेंगे संजय जी लागू की करें। अब उसका एक ड्राफ्ट मिनट, देखा जाए कैसा होता है जी। हाँ हाँ, वो जरूरी बात है, क्योंकि संजय जी, मैं तो आपको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि बीफ कंजम्पशन, मैं इस बात पे नहीं कह रही थी द काउ इज नॉट सेक्रेड, ऑफ कोर्स द काउ इज सेक्रेड टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। मैं कह रही थी कि बीफ कंजम्पशन को लेके अलग अलग कानून हैं अलग अलग प्रदेशों में, मैं एक फैक्ट स्टेट कर रही थी। दूसरा मैं कह रही थी अश्विनी जी, जो संजय जी ने कहा कि आप एक कानून लाते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल कानून कुछ और है तो वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाएगा, तो वो एक तरह से एक सुपरफिशियल चीज नहीं रहेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जो अब ठीक है, आदेश देगा उसको पालन किया जाएगा। इस देश चलिए, में राम को साबित करने के लिए 500 साल लड़ना पड़ा, और आज जो है भाई सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला, आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां भी होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कुछ कहना चाहिए, वहां पर कुछ ऐसे माननीय भी बैठे हैं जो 4 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी की सजा से आजीवन कारावास दे देते हैं। तो देश में कई चीजें ऐसी भी आती हैं जो उलट सकती हैं, कुछ सही भी चीजें लागू होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जी। ठीक है, अतीक साहब बोलिए, अतीक साहब, लास्ट कमेंट्स नाउ, अतीक एंड देन तवलीन, देन संजय, लास्ट वर्ड, या अतीक साहब। Barka, there are scores of points wherein I can expose the BJP's intent and also how they are misogynist in their approach and patriarchal. Just one I will point out to you, that on the issue of marital rape, when the judiciary was asking the central government to come out clean and have a say on it, they refused. How they refused? Saying that the time is not right to give, such, color to an opinion on this. The marital rape issue concerns only two people, the husband and wife, and the central government is unable to make a frame of mind. And herein the UCC will be concerning the length and breadth of the entire India, and they are towards that. Besides, the directive principles have scores of other things wherein the BJP can approach, the government can approach towards that. They don't want to do it. They are only for Article 44. Why? Okay, Tavleen, last word, and then Sanjay, you can wrap this up for us. Tavleen. Okay, I just want to contradict two things that Ashwini ji said, which I did not say, which he's credited to me. I did not support the Shariat. I've actually was saying the opposite. शायद आपको समझने में, अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है, लेकिन the other thing that I want to say is I never said तौलीन जी, रहमान साहब ने कहा था उनको भी जवाब देना था। मैंने आपके लिए, यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, एक साथ जवाब देना है, तो मैं नाम लेके नहीं दे रहा हूँ। आप मेरा नाम ले, रहमान साहब ने कहा था उनको जवाब देना था। मैं आप शायद हो सकता है मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हो सकता है भाई मैं अंग्रेजीदार नहीं हूं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और रहेगी, तो उसमें नहीं समझ में आती है। लेकिन मैंने रहमान साहब को सरिया का जो पक्ष ले रहे थे, इस पर मैंने कहा था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं किया है। एक, शरीयत का समर्थन मैंने नहीं किया। दूसरा, मैंने गाय काटने का समर्थन नहीं किया। मैंने गौ रक्षकों की हरकतों को, उसको मैंने कहा कि वो गलत था और नहीं होना चाहिए था, और बहुत बहुत बुरा माहौल बना। और जो
आम जो मीट की दुकानें थी, जो ये गोश्त का धंधा बिल्कुल बंद हो गया, पशुओं के मेले बंद हो गए, पशु बेचना पालना वो सब बंद हो गया। तो मैं उसकी बात कर रही थी, और ये ऐसे रोजगार हैं जिसमें मुसलमान ज्यादा पाए जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही थी। ओके चलिए संजय, लास्ट वर्ड, वेयर आर वी हेडेड फ्रॉम हियर? अश्विनी जी ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि प्रदेश कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट दीज स्टेट्स टू बी पासिंग लॉज इन देयर असेंबलीज. Well, since there's been so much heated debate, let me bring down the temperature a bit. Ultimately, this uniform civil code business is only about people, Muslims not marrying more than once. So Ram Jetmalani, ultimately Ram, who had 2 legal wives, that was because the marriage was before the Hindu Code Bill. He said that he had suffered the maximum punishment known in law for bigamy. When somebody asked him what, he said, "I have 2 mothers-in-law." Well, So Sanjay, I think I mean, that's what the BJP doesn't want. you know that sexist jokes are not an answer to this serious debate. No, right? the BJP seems to Yeah. want to help people not to have more than one mother-in-law. That seems to be their agenda. I mean, there's no evidence to suggest that father-in-laws are just not as problematic, but there's a more serious question. Let's come to it. Legally, what's going to happen? Legally, nothing is going to happen. I think that they can't come up with a draft, and if they end up with a draft which sort of modifies the Hindu Code Bill in its application to Uttar Pradesh or Assam or whatever, then I suspect that it will end up being stayed by the courts, and there will not be presidential assent. The center cannot assent to having its laws amended by the states. Well, we'll see what happens when these drafts are circulated, and we have to see how the central government responds. Thank you, Ashwini Shahi, Atiko Rehman, Tableen Singh, and Sanjay Hegde, and to our audience, thank you for watching. Goodbye. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.